Can the पुराना Islamabad United please stand up? Welcome to the shiny side. मैं हूं आपका होस्ट फरीस और आज मेरे साथ हैं ह्यूस्टन से उमर बसीर और बहरीन से इमरान असलम. How you doing, guys? Hey, Assalamu alaikum. Good, how are you? Good, good. Imran, this is the first preview you're doing with us, so I'm going to come straight to you. Islamabad Okay. United की ऐसी टीम है जो पहले 2018 के बाद उन्होंने एक फाइनल नहीं खेला है. Now, if you talk about other teams that have struggled in the PSL, perhaps like Karachi or Quetta, काफी obvious है कि वो क्या-क्या थोड़ी मोटी-मोटी गलतियां कर रहे हैं. With Islamabad United, it seems a bit like all the decision making जो अगर आप देखें तो I think it looks pretty good. I think उनकी टीम जो है वो रिफ्रेश करते रहते हैं, etc. They seem to have the right personnel, management maybe, etc. But somehow they just have struggled to make it to the final even in the last 5 seasons now. So what do you make of that? Do you think it's bad luck or do you think there's something more to it? Or bad luck, but I think they've struggled पिछले एक दो सीजन्स में लास्ट जंक्चर्स पे आके some key matches में. Overall, they I think maintain a strong squad, अच्छी batting depth, bowling etc. सब कुछ है, but I think it's just maybe something about getting over the line in the key moments. कुछ साउथ अफ्रीका की सिचुएशन बनती जा रही है शायद. उनका 2 coaches ago they had on both as their coach as well. But anyway, I guess Omar, the thing is, Islamabad is known for being perhaps the most data-driven side. They also like to believe and say again and again how they believe in data. उनका I think hashtag भी होता था दिमाग से at some point. They probably use more analytics than anyone else. They have Ben Jones as the team analyst, who's one of I love him. He's a crick analyst. बहुत जबरदस्त analysis होती है उनकी. वो उनकी टीम का हिस्सा है. But again, I guess similar question to Imran. Somehow it's been they won 2 of the first 3 titles, and उसके बाद से पिछले 5 seasons में वो final में भी नहीं आए. So how do you think? Do you think they should keep doing what they're doing because they generally seem to be doing the right things? या कुछ बदलने की जरूरत है? I think data driven होना तो बहुत ही अच्छी चीज है, right? Data driven कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एज इन स्पोर्ट्स, उससे आप सिर्फ नतीजा अपनी आपको पता चल जाता है आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, ऑपोजिशन की वीकनेसेस क्या है, मैचअप्स एंड स्टोन, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको फील्ड पे जाके एक्सिक्यूट करना है. और मेरे लिए जो स्टैंड आउट वो है कि आप टीम बनाते हैं, अराउंड 2-3 आपके मेन बैट्समैन होते हैं, आपके 2-3 स्ट्राइक बॉलर्स होते हैं. वो मुझे इस्लामाबाद में नजर नहीं आ रहा. अगर मैं 3 बोलूं कि ये लोग किसी भी इंटरनेशनल लेवल में वॉक इन कर सकते हैं. हमने जब उस दिन लाहौर का रिव्यू किया था फॉर एग्जांपल, उसमें काफी मैच विनर्स बहुत क्लियर थे. इनके उसमें मैच विनर्स हैं, लेकिन वो रिलायबिलिटी जो आपको एक चाहिए होती है वो एक दो लोगों पर डिपेंड करने के लिए, वो थोड़ी सी मुझे नजर नहीं आ रही. तो मेरे ख्याल में देयर आर सम स्क्वाड चेंजेस दैट होपफुली हैपन. So if you look at the recent coaching changes, so they've appointed a new coach now. So Mike Hesson उनके नए कोच हैं, उनका पहला सीजन होगा बतौर कोच ये. और उससे पहले माइक हैसन ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के कोच रह चुके 3-4 साल. 2015 के वर्ल्ड कप में फाइनल में लेके गए थे उनको. वो आरसीबी के कोच रहे हैं 3 या 4 साल. अगेन आरसीबी इन द आईपीएल हैज नेवर कोई टाइटल जीता नहीं है, बट आई थिंक दे हैड अ गुड शोइंग अंडर हिम. पिछले साल उनके अजहर महमूद कोच थे जिनको उन्होंने रिप्लेस किया. इससे पहले मिसबा और रोहान बोता भी कोच रह चुके हैं इनके. सो ऑफकोर्स पहले 3 सीजन इनके डीन जोन्स कोच थे, जिनमें से वो 2 सीजन एक्चुअली जीते थे. सो कोचिंग में थोड़ा सा इनका आई गेस ऑल द टीम हैज बीन मोर कंसिस्टेंट. कोचिंग में एक चेंज आया है. जहां तक अगर मैं जिक्र करूंगा टू हाईलाइट दिस अगेन, वो पहले 4 पीएसएल्स के में से वो 3 फाइनल खेले और वो पहले 3 पीएस में 2 जीते भी हैं, राइट. सो अगेन सुपर कंसिस्टेंट, बट उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ हुई है. एक चीज इनको आई थिंक अगर आप देखें इनका लास्ट टाइम इनके स्टार प्लेयर्स कौन थे, तो आई थिंक वन वाज आजम खान. आई थिंक इनका दूसरा सीजन था शायद लास्ट ईयर फॉर इस्लामाबाद. इन्होंने 280 रन बनाए थे, बट ही एवरेज 40 एंड 160 के स्ट्राइक रेट पे. उसके अलावा इमाद वसीम was the other one, right? Now, I guess what that means is none of the other bowlers, perhaps, and Hassan Ali थे, Mohammad Naseem थे उनकी टीम में last year. उसके अलावा at the top of the order, I think a lot of the team revolves around Shadab batting at 4. But I think nobody really stood out in terms of if you look at the top team of the tournament stats वगैरह में देखें तो कोई भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लेयर as such उसमें stand out नहीं करा. By the way, those of you watching, please like the video and subscribe to the channel. We'll be doing a lot of PSL content बाकी टूर्नामेंट में करते रहेंगे. अब हम जल्दी से जरा स्क्वाड को देख लेते हैं एक दफा before we moving on. अब मैं इनका स्क्वाड आपके लिए लगा रहा हूँ स्क्रीन पे. So
again, if you look at the batsmen आप देखें तो वहाँ पे Alex Hales, again one of the best batsmen in T20. Then they have Colin Munro, again a great top order batsman. आजम खान का जिक्र किया मैंने अभी. उसके अलावा I guess what उनके लिए जो खुशाइन चीज़ है वो ये है कि उनके ऑलराउंडर्स की लिस्ट काफी लंबी है. So they've got again Shadab हैं, Agha Salman who's recently again become prominent of Pakistan. Imad Wasim हैं, Fahim Ashraf again has been a pretty useful seam all-rounder for them. Qasim Akram हैं. Bowling में they have Timal Mills and then they have Rahman Rice. And then they have the three brothers, Naseem Shah, Ubaid Shah, and मैं तीसरे भाई का नाम इस वक्त यहाँ ज़हन से निकल गया, बट नसीम शाह, उबैद शाह एंड तीनों ब्रदर्स शाह ब्रदर्स हैं वो इनकी टीम में मौजूद हैं. सो इनिशियल रिएक्शन इमरान, हाउ डू यू लुक एट द स्क्वाड? एनी इनिशियल थॉट्स? Yeah, I think Islamabad, like you were saying, Faris, ये हमेशा से they've been a team of a lot of players who come together and make things happen for them. And कोई major star player type factor नहीं था, जिस तरह Babar Azam was driving Karachi for a while, Rizwan was driving Multan. They did not have that for them. और अभी भी अगर उनका squad देखो आप, उसी तरह ही है. But अभी for me जो एक major standout चीज है squad में is, ठीक है ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, बट मेन 4 स्पेशलिस्ट बैट्समैन है सिर्फ. ठीक है, उसमें से भी आपके साथ मतलब यू हैव आजम खान, उसके अलावा आपके 3 एक्चुअली इंटरनेशनल बैट्समैन हैं. तो इनका 11 कॉम्पोजिशन काफी डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आपने अगर टॉप 5 में ये 3 बैट्समैन इंटरनेशनल खिलाने पड़ेंगे, देन यू हैव वन मोर स्लॉट लेफ्ट ओनली व्हिच यू गिव टू वन ऑफ द बॉलर्स. सो आई थिंक एक तो मुझे ये स्टैंड आउट वीकनेस लग रही है इनके स्क्वाड में. ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा हैं, यस, लेकिन आई थिंक द अदर की फैक्टर वुड बी के आई थिंक इनका शादाब है, इमाद है, सलमान अली आगा है, ये 3 स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं. शादाब हैज बीन आउट ऑफ फॉर्म. सलमान अली आगा, आई डोंट सी हिम एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर. इमाद आल्सो काफी अर्से से हैज नॉट बीन प्लेइंग रेगुलर क्रिकेट. तो आई थिंक इनकी स्पिन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस विल बी अ मेजर फैक्टर जो उनको आगे लेके जाता है. फास्ट बॉलिंग पे अगर देखें तो obviously Naseem Shah is there, Ubaid Shah under 19 में at least की performance looks like a promising youngster, maybe lack of experience there but promising. लेकिन I think ये बैटिंग डेप्थ जो है in terms of number of specialist batsmen और spin department की strength है could be 2 major weaknesses which could potentially come up in the tournament, I feel. उमर, before I get your comment on the squad in general, एक और फैक्टर जो है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ना, वो एंकर बैट्समैन में बिलीव नहीं करते. दे डोंट हैव अ बाबर आजम और अ रिजवान और अ विराट कोहली और समबडी लाइक दैट. तो आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक दैट्स आल्सो व्हाई समटाइम्स व्हाइल चेजिंग सर्टेन काइंड ऑफ स्कोर दे आल्सो टेंड टू कोलैप्स, बिकॉज़ दे बेसिकली उनका एक से एक अग्रेसिव बैट्समैन होता है. डू यू थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम इन द स्क्वाड जनरली? हाँ, तो एब्सोल्युटली. तो मेरा जो शुरू में कमेंट था वो यही था कि एक आपके पास एक बेस फाउंडेशन होनी चाहिए, राइट, जिसके अराउंड आप बिल्ड करते हैं. एंड देन यू हैव दीज मैच विनर्स हु कम एंड बैट अराउंड दीज कंसिस्टेंट प्लेयर्स दैट यू हैव. इमरान मेंशन्ड बाबर आजम, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे. तो इनकी टीम में मुझे वो नजर नहीं आ रहे. सिर्फ 4 बैट्समैन, वो भी आर ऑल बिग हिटर्स ऑफ द बॉल, व्हिच इज ग्रेट. लेकिन who's going to play that anchor role? And उसमें consistency आती है. आपके performers are high risk. They have an impact when they perform, लेकिन they're high risk. So how do they win games in places जहाँ पे ये लोग successful ना हो? तो वो एक thought process है, I think. और फिर I think bowlers में भी I think मेरे ख्याल में इमाद एंड शदाब अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलर्स में नसीम शाह है. उसके अलावा रोमन रईस एक जमाने में बहुत जबरदस्त थे. आई थिंक कम बैक होपफुली कंटिन्यूज. लेकिन I mean नसीम के भाई उबैद शाह was the star of the under 19 World Cup, right? लेकिन under 19 से लेके PS सीनियर क्रिकेट जो है is obviously a step up, so we have to see how he does. उसके अलावा नसीम शाह की भी बाय द वे एक नेट से बॉलिंग करते हुए तस्वीर आई है ना. कीप इन माइंड he hasn't bowled in 6 months at any comparative level, and उनकी fitness does not look that great either. So I would, from a Pakistan point of view, मैं चाहूंगा नसीम शाह थोड़े आहिस्ता आहिस्ता ईज इन हो, एज अपोज टू उनको फुल टिल्ट जो है पहले दिन ही परफॉर्म करना पड़ जाए. सो आई थिंक यू राइट, यहाँ पे कुछ इनकी कंसर्न्स हैं. एंड देन इमरान ने बड़ा अच्छा चीज पॉइंट की कि अगर आप इनकी लिस्ट देख रहे हैं तो मैंने तो उसका बड़ा पॉजिटिव स्पिन दे दिया कि मैंने कहा कि जी ऑलराउंडर्स बने हुए हैं, बट अगर आपके पास टॉप 4 में सिर्फ 4 बैट्समैन आ रहे हैं और उनमें से एक जॉर्डन कॉक्स हैं जो विकेट कीपर है असल में, और आजम खान भी मौजूद है, क्लियरली कुछ चीज मिसिंग है यहाँ पे आपके स्क्वाड में, स्ट्रक्चरली स्पीकिंग, चाहे प्लेयर्स कोई भी हो आपके पास. जहां तक उसके अलावा आई गेस ताल्लुक है इनकी, आप बॉलिंग का देखें तो अगेन नसीम शाह वगैरह हो गए, लेकिन Timal Mills himself is very injury prone also, right? So like even though he's a international kind of T20 leagues वगैरह खेलते रहते हैं, good PSL record as well, लेकिन वो भी इंजरी प्रोन है, तो काफी इनके लिए चैलेंज होगा ये.
I guess moving on to what we think they will be. And by the way, I think I probably mentioned here कि इनके कुछ players जो last time थे जो अब नहीं हैं. They had last time around they had Gurbaz at the top of the order. Then they had Asif Ali, who again उनका एक specific role है, but उस role के वो बहुत माहिर हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए. उन्होंने काफी performance किया इनके लिए. उसके बाद सोहेब मकसूद थे जो top order में जो नहीं है. फिर मोहम्मद वसीम जूनियर and हसन अली. वो both again मोहम्मद वसीम जूनियर was probably the best bowler. हसन अली again जैसे भी हैं वो एक्सपीरियंस एक बॉलर हैं, सो ये उनको वो मिस करेंगे मेरे ख्याल से. मूविंग ऑन टू व्हाट आई थिंक द 11 विल बी लाइक. अब जो मुझे उनकी 11 समझ आ रही है वो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ. इमरान, डू यू वांट टू गो फर्स्ट? डू यू थिंक इनकी 11 यही होगी या आपको लगता है कि किसी और किस्म की 11 होगी? जो मेरा ख्याल से टॉप ऑफ द ऑर्डर पे आई इमेजिन दे विल प्रोबब्ली एंड अप हैविंग Alex Hales and Jordan Cox, and then Colin Munro at 3, and then which is again all foreign, but that's how they play. And then Shadab at 4, perhaps Azam at 5, Agha Salman at 6, and then so on and so forth. How do you see the 11, Imran? Would you make any change? आपके ख्याल में इसी किस्म की 11 होगी? देखिए जो इनका स्क्वाड है अब वो पहले 4-5 में तो उनके पास कोई ऑप्शन है ही ज्यादा. वो 4 जो बैट्समैन हैं इनके स्क्वाड में वो तो चारों खेलने ऑलमोस्ट हर मैच में. और ऑब्वियसली शादाब भी आता है, तो टॉप 5 जो है आई थिंक वो तो प्रीटी मच सिलेक्ट देमसेल्व्स. उसके बाद भी फिर बिकॉज बैटिंग में इनकम है तो आपको यू नीड टू फिल देम अप विद ऑलराउंडर्स, तो फिर आगे सलमान, वसीम और फहीम अशरफ भी काइंड ऑफ नेचुरली बनते हैं. तो ज्यादा रूम है नहीं आई थिंक इस टीम में रोटेशन की. मोस्ट लाइकली यही 11 होगी. मैक्सिमम आप नीचे से नसीम शाह, उबैद शाह, थोड़ी सी रोटेशन हो सकती है. टेबल मिल्स की जगह वो जो यूएई का पेसर है इनके स्क्वाड में, जी, ही विल कम मोहम्मद इन, वसीम. बट नॉट टू मच. आई थिंक they will probably start with something very similar to this 11 और फिर आगे जाके शायद चेंज करेंगे, लेकिन ज्यादा रूम है नहीं इनके पास अपनी 11 को चेंज करने का, टॉप 7 तक एटलीस्ट. Makes sense. Omar, your view on the 11? नहीं, लुकिंग एट द स्क्वाड यही है. और आई थिंक मेन पॉइंट इनका मेन चैलेंज यही होगा कि बेंच स्ट्रेंथ में कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. तो आप बैटिंग में तो लिटरली कोई चेंज कर ही नहीं सकते अनलेस कोई समथिंग कुछ ड्रामेटिक चेंज हो. बॉलिंग में हाँ रोमान रईस आ सकते हैं शायद फहीम अशरफ के लिए या उबैद शाह के लिए, लेकिन उसके अलावा मतलब हाँ आई डोंट थिंक इनके पास ज्यादा कोई ऑप्शंस हैं. बैटिंग ऑर्डर थोड़ा इनका फ्लोटिंग है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. आगा सलमान शायद शदाब से पहले आ सकते हैं, वो हो सकता है. लेकिन हाँ टॉप 2 आई थिंक इज कंफर्म्ड और बाकी फ्लोटिंग मिडिल ऑर्डर, एंड आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा गुंजाइश है यहाँ. Okay, so I guess moving on, before we I guess wrap up, Umar, prediction, where do you see Islamabad United finishing in the 6? मुझे लग रहा है ये लोग अनफॉर्चुनेटली बॉटम हाफ में होंगे. 5-6 इस वक्त मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा कि ये लोग टॉप 4 में होंगे. Okay, interesting. And so to go back to my earlier question, the bad run for Islamabad continues in Umar's view, but Imran, आपका क्या view है? आई थिंक मैं भी एग्री करता हूँ उमर से. मुझे नहीं लग रहा कि ये टॉप 4 प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगे विद दिस स्क्वाड, एंड देन मेक ऑफ द टीम मुश्किल लग रहा है बहुत इनका आगे जाना. Okay, so I hope for Islamabad से कि उनकी टीवी में ये प्रीव्यू ना देख रही हो, because वो तो थोड़े से डिजेक्ट हो जाएंगे, but anyway, good luck to them. मैं ये ऐड करूंगा कि ये ऐसी टीम है कि ये लोग एक दो सरप्राइजेस करेंगे, कुछ मैचेस ऐसे जीत जाएंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए होती है टूर्नामेंट जीतने के लिए वो मुझे नजर नहीं आ रही. And I guess उसमें ऐसे टूर्नामेंट ये होता है ना कि एक दफा आप किसी तरह आप टॉप 4 में अगर आ जाएं तो फिर वो on that day they have the guys Alex Hales, तो कुछ भी हो Shadab, सकता है, Naseem Shah, blah blah, कुछ भी हो सकता है. But anyway, thank you for being on, Imran and Umar. Thank you Faris. And those of you watching, please like the video, subscribe to the channel, and we'll be back with some more previews. In the meantime, stay tuned to the shiny side.